Welcome students. As we have completed our poem, I Dream a World, today we are going to revise the question answers related to this poem, and you have to prepare for a test related to this poem which will be taken tomorrow. In case you have any queries or any doubts, feel free to message me or drop your question in the comment box. So, as we proceed ahead, let's start reading the poem by Langston Hughes. I hope you must have written all this in your fair notebook by now, and also you must have taken a reading. So, I would just explain the question answers to you, and keep this in mind that there is only one extract from the poem given in the question answers. However, you may get other extracts also in the test. So you need to take a deep reading of the poem and watch the video I shared with you earlier related to the complete poem, the explanation of the complete poem. Because only then you would be able to answer any question related to the extracts or any other sentence, any other line of this poem. So, in this poem, the poet expresses his desire. Desire means ichha, his deep longing to live in a world free from any discrimination based on caste or color. As we read that the poet, somewhere he was an African American poet, and he faced discrimination, and he also saw many others like him facing discrimination based on their color in America. So he has dreamt of a world in this poem, वो एक ऐसे संसार की कल्पना कर रहा है जहां कास्ट और कलर के बेसिस पे किसी में भी कोई डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाएगा. He wants that the world should become a better place to live. वो ये चाहता है कि ये संसार एक बेहतर प्लेस बन जाए, जगह बन जाए रहने के लिए. Moving on to the extract which is given in the question answers, moving on to part B. And joy, like a pearl, attain the needs of all mankind. What has joy been compared to? So joy, इसको किससे compare किया गया है? Pearl से, as we can clearly see in this sentence, and joy, like a pearl. What is the significance of this comparison? इस कंपैरिजन की ये जो तुलना की गई है खुशी की पर्ल के साथ, मोती के साथ, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? So it means that everyone's life, remember everyone's life, he is not referring to his own life, he is referring to everyone's life, will be full of, भरी होगी वो किससे? हैप्पीनेस, खुशी से और लव से. जैसे कि एक मोती जो है, एक सीप में से निकला मोती खुशियां बिखेरता है, अगर किसी को वो सीप मिल जाए मोती वाली समुद्र के किनारे तो वो बहुत खुश होता है. उसी प्रकार जो है खुशी हर इंसान की जिंदगी में फैल जाए, यही यहाँ पे पोएट का मतलब है. So there are two expressions given over here in part C. What qualities have been personified in the following expression? कौन सी qualities personified means बढ़ा के. Personification क्या होता है? As you have read the figures of speech earlier, I had shared with you a video related to different figures of speech, out of which personification is one, in which a thing is shown as if it's a living thing. So in these two lines, the first line, love will bless the earth. The second line, wretchedness will hang its head. So these two things, love and wretchedness, have been shown as human beings. They are treated as human beings and they are shown as living beings in this particular stanza. So कौन सी qualities हैं जो personify की गई हैं? Next, thoughts, as you know, questions related to higher order thinking skills. As you can see, there are not many questions related to the extracts here. So just remember that you have to watch the explanation. I am repeating this again so that you make sure that you watch the explanation of the poem once again. Now, the question of thoughts is, the poet has described some features of his dream world. अब पोएट ने अपने ड्रीम वर्ल्ड के कुछ फीचर्स बताए हैं, कुछ एक
चीजें बताई हैं. Work in groups of 4 or 5 and make a list of the steps that need to be taken to translate the poet's dream into reality. तो यहाँ पे आपको ग्रुप्स में या अपने इंडिविजुअल थिंकिंग के बेसिस पे आपको कुछ बताने हैं स्टेप्स, जिससे जो पोएट का जो ड्रीम है, जो उसका सपना है, उसको हम असलियत में बदल सकते हैं. So the answer to this question is following steps are needed to be taken to convert poem's dream into reality. क्या क्या steps हैं? People should have freedom of speech and action. Freedom of speech means कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए, और action कुछ भी करने की. There are many countries जहाँ dictatorship है, ठीक है. India is a democratic country. You all have read about it. You all are aware about it. But there are still several countries where people are treated as slaves. And the time the poet here is referring to, Africans were majorly treated as slaves. They were flogged in ships from Africa and transported to America just to be treated as slaves, so that they could have their own slaves, they could do errand jobs for them. So this here, it represents that first of all, everybody should be given a freedom to speak and to do any action of their choice. Next is there should be no discrimination. Discrimination अब तक मतलब पता होगा आपको, भेदभाव, किसी तरह का अंतर, किसके बेसिस पे, किस आधार पे, कलर, कास्ट या जेंडर पे. नेक्स्ट इज देयर शुड बी लव एंड केयर अमंग ऑल. सभी के बीच में लव, प्यार होना चाहिए और केयर होनी चाहिए. पीपल्स फीलिंग ऑफ ग्रीड यानी लालच, हेट्रेड यानी नफरत, एंड एनवी मींस जेलसी should be eliminated, removed. So जो लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति की चीजों के प्रति लालच, नफरत या जलन का भाव है, वो खत्म होना चाहिए. Poor caste should be treated well and uplifted. अब जो downtrodden people है, जो unprivileged लोग हैं सोसाइटी के, उन सभी को, यानी कि जो गरीब हैं, किसी भी वजह से गरीब तबके के जो लोग हैं, उनको अच्छे से उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए और अपलिफ्ट किया जाना चाहिए. उनको भी ऊपर उठाने में मदद की जानी चाहिए जितना भी संभव हो. So these are few steps. You may also add some of your own. Next is life skills. A new child has joined your class. He is black. No one wants him. You feel concerned for him. How will you ensure that he becomes a part of your class? So एक नया बच्चा है आपकी क्लास में और वो ब्लैक है. ब्लैक मीन्स वो अफ्रीकन है. कोई भी नहीं चाहता कि वो आपकी क्लास में आए और आपको भी कंसर्न फील होता है उसके लिए. तो कैसे आप इंश्योर करेंगे कि वो आपकी क्लास का एक पार्ट बन जाए? Other students do not want. Sometimes it happens that a new student comes in your class, and otherwise I know all of you are very good students. All of you treat a new student really very well. But in certain circumstance, if at all, you have to imagine a situation wherein a black student has come to your class and nobody is showing sympathy towards him, nobody is wanting to talk to him. So what would you do? The answer is, I will make the students understand that it does not matter whether we are black or white. बिल्कुल यही करना है आपको कि आपको दूसरे बच्चों को ये समझाना है that it does not matter. मतलब ये मायने नहीं रखता. वेदर हम यूज करते हैं कि या तो, ठीक है, बताने के लिए कि चाहे कोई ब्लैक है या व्हाइट है, व्हाट मैटर्स इज दैट. जो मायने रखता है, वी शुड बी गुड ह्यूमन बीइंग. हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर और क्रीड. कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी में कास्ट, कलर, क्रीड के बेसिस पे. वी ऑल आर क्रिएशंस ऑफ वन गॉड. सभी को एक ही भगवान ने बनाया है और हर एक इक्वल है इस धरती. नाउ वैल्यूज. Greed and avarice are two negative human qualities we need to shun. Do you agree? Shun means stop from spreading, stop from developing in ourselves, abolish, बिल्कुल खत्म कर देना. So greed, लालच, avarice, बहुत ज्यादा हमने पोएम के एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि मटेरियलिस्टिक चीजों को इकट्ठा करने की होड़ जो है, ये हमें जो है, ये क्वालिटीज जो हैं बहुत ही नेगेटिव ह्यूमन क्वालिटीज हैं और इनसे हमें बचना चाहिए. क्या आपको ऐसा लगता है? और अगर ऐसा लगता है, हाउ डू यू थिंक वी कैन एंश्योर दैट वी डू नॉट फॉल विक्टिम्स टू सच क्वालिटीज? विक्टिम्स मतलब इसके हम शिकार ना हो जाएं ऐसी
क्वालिटीज के। अब क्वालिटीज बैड भी होती हैं, गुड भी होती हैं। सो इन बैड क्वालिटीज से हमें कैसे बचना है, नेगेटिव क्वालिटीज से कैसे बचना है, वो बताना है हमें। So the answer is yes, we agree that greed and avarice are two negative qualities we need to shun. So this is the answer to the first question. The first sentence is the answer to the first question, because this question itself is divided into two parts. Now, second part you have to tell, we can adopt the following qualities to avoid negative qualities. अब ये following qualities हैं जिससे कि हम ये negative qualities greed और avarice की बच सकते हैं. So greed and avarice should be eliminated and replaced by the following qualities. अब greed और avarice को हम eliminate, खत्म कर सकते हैं और replace कर सकते हैं इन following qualities के साथ. ये जो नीचे लिखी हुई qualities हैं, इनके साथ हम इनको जो है खत्म कर सकते हैं, अपने अंदर आने से रोक सकते हैं. Giving respect to our parents, teachers and elders, respect करके बड़ों की. Taking care of the gift of nature, ठीक है, जो प्रकृति ने हमें गिफ्ट दिया है हमारे नेचर के लिए, हमें इंसान बना के हम उसका अच्छे से ध्यान रखें और हर एक की मदद करें. शोइंग एम्पैथी टू नीडी पीपल, जो जरूरतमंद है उनके साथ हम दयालुता का भाव रखें, उनके दृष्टिकोण से, उनके नजरिए से हम चीजों को देखें और उनकी मदद करें. रिस्पेक्टिंग अदर्स इन देयर रिलीजन. So it happens that people do not respect others' religion and the customs they follow sometimes. So this should also not be done. If we follow all these good qualities, we will stay away from the negative qualities of greed and avarice. You can also add sentences of your own if you want. Now we move on to the last question, which is writing skills. In this, you have to write a paragraph on the topic man was born free, but everywhere he is in chains, in about 80 to 100 words. So you have to write a paragraph on this topic that man was born free means when man is born, जब इंसान पैदा होता है तो वो फ्री होता है, बट असल में संसार में हर जगह वो चेन्स में होता है, यानी कि वो किसी बंधन में होता है. So you have to express this in about 100 words, and in this paragraph it is written, it is true that man was born free, but with time he has bound himself in chains. तो समय के साथ उसने अपने आप को चेन्स में, बंधनों में बांध लिया है. A child is free from any religion, caste or other discrimination, but as he moves on in life, he is bound in various duties and responsibilities and cannot free himself. So as you must have seen, when you were a toddler, you were an infant, then you were not loaded with so many responsibilities. These days, everyone must be telling you, it is your time to study, it is the time to do this, it is the time to do that. However, when you were far too young, when you were about 2 years old or 5 years old, you were not loaded with so many responsibilities. So the difference is that with age or with time, a human keeps getting bound in chains. So why and how is he in chains? We have to just describe that in this paragraph. So हम यहीं पे यही कह रहे हैं कि वो चाइल्ड जो है किसी रिलीजन, कास्ट या और किसी डिस्क्रिमिनेशन से फ्री होता है, बट जैसे वो लाइफ में आगे बढ़ता है वो बनता जाता है, ही इज बाउंड कई सारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, एंड कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ, और वो इससे फ्री नहीं कर पाता अपने आप को. All men have same emotions and feelings so that they should not be bound by caste or other boundaries. So सभी लोगों की सेम इमोशंस और फीलिंग्स होती हैं ताकि वो किसी भी कास्ट या किसी और बाउंड्रीज में बंध ना जाए. When everyone's basic needs are same, they shouldn't be divided. So जब सभी की बेसिक नीड्स जो हैं वो सेम है, एक बराबर हैं, तो उनको डिवाइड नहीं किया जाना चाहिए बेस्ड ऑन एनीथिंग. उसको चेन्स में नहीं बाउंड किया जाना चाहिए विद loaded added burden. All men are equal in the eyes of God. तो मैन ही है, इंसान ही है जिसने दूसरे इंसान को बांधा है. भगवान की नजरों में सभी इक्वल हैं और उसने किसी को भी बाउंड नहीं किया. जब भगवान ने भेजा है सभी इंसानों को तो एक ही तरह का बना के भेजा है, किसी के 3 आंखें या 4 हाथ नहीं दिए हैं. Everyone has the same basic features, so everyone should be following the same thing, and man himself has bound him in the chains of religion, caste, traditions and everything. However, God had given only one basic thing, that man has to fulfill his duties and responsibilities and not
load others with his own prejudice. So we just need to keep that in mind. You can also write this paragraph in your own words if you want. And on this note, we end the explanation of the question answers of this chapter. So I hope you have understood all of them and have completed the revision of this poem, I Dream a World. Thank you.